Hello students, very good afternoon and welcome to Government Private Job Alerts. So students, this video is to inform the students, those who are waiting for their FAB result of Wipro, because as you know, many students have got the result, those who have written their exam on first day, that is your 23rd, and many of the students did not get, and continuously we have hundreds of messages about asking that sir, when will Wipro send their mails, or when will be the next round, and the most important thing is what is the next round after getting shortlisted in the Wipro. So in this video we are going to discuss about all the things. So before that, congratulations from our side, from our bottom of heart, those who got selection mail, and those who did not get, so you have to wait patiently. I could say to them only कि आपको थोड़ा वेट करना है, पेशेंटली वेट कीजिए, मे बी नेक्स्ट इज योर टर्न. बिकॉज देखिए, जिनका 23rd को एग्जाम था उनको पहले मेल आ गया. आफ्टर दैट नाउ दे आर सेंडिंग फॉर 24th Feb. So we have not got the clarification about the 25th Feb, but 24th Feb we got the clarification that many students have got the mails. So that means, what it means, that they have started sending the mails means they have started for 24 Feb. So you have to wait patiently, mean they are starting now, they have started. And you know कि जब मेल स्टार्ट होते हैं सेंड करने, तो it takes 1 day also or 1.5 day also. I told you to many of our students who texted us for asking their doubt about the Wipro exam, if you have done good, so do not worry, just prepare for the next round, that is your next step round. So next step round is your business discussion round. The video we have already uploaded on our channel. You have to go to the Wipro playlist. I told you how you have to go. So from the Wipro playlist you will get to know about the business discussion round. We have discussed each and everything in detail. Firstly, we have explained you what it is and why they are taking this round. After that, we have also explained you about the certain steps, क्या क्या उसके steps हैं, मीन how many times, how much time that particular round takes, कितनी time का होता है एक particular student का, एक average time भी है. After that, your interview questions also, HR questions we have discussed, mean the basic HR questions, they will be asked, not they can be asked, they will be asked definitely to each and every student. And that some TR questions also, so you can go through that playlist. We have created that. So business discussion round, you can also search business discussion round by Wipro, or you can search Wipro business discussion round by Government Private Job Alerts on your YouTube. So you will definitely get in our first line also. So now after that, Wipro started sending mails. This is the information, first thing. Second, we have told about the business discussion round. Now third is you have to check your mailbox, also check the spam folder also. Sometimes क्या होता है कि स्टूडेंट्स वरी करते रहते हैं, टेंस्ड रहते हैं, एंड दे गॉट दी मेल बट दे डिड नॉट नो कि मेल कहाँ पे आया. तो यू हैव टू चेक फ्रॉम ऑल बॉक्सेस फर्स्ट. आफ्टर दैट चेक इन द स्पैम फोल्डर ऑल्सो, बिकॉज मैनी टाइम्स क्या होता है कि स्पैम फोल्डर में भी कुछ स्टूडेंट्स के जो मैसेजेस होते हैं वो आते हैं. सो आफ्टर दैट did not get mail, so what now? Those students who did not get mail, so you have to wait patiently. Today or tomorrow, आज या कल में आपके मेल्स आ जाएंगे, so do not worry. एंड आफ्टर दैट बिजनेस डिस्कशन राउंड, वी टोल्ड यू, आप वहाँ से अपना प्रिपेयर कीजिए एंड वी होप आपका इस बारी सिलेक्शन हो जाए. एंड उसके बाद जिनका भी, देखिए अभी क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स का क्या है कि वी आर कंटिन्यूसली इन टच विद आवर स्टूडेंट्स, की कुछ कह रहे हैं कि हमारा 23rd का भी कोई अपडेट नहीं आया. सो वी वुड से कि आप वेट कीजिए. क्या होता है कि ये जो MNC कंपनीज होती हैं, मास हायरिंग कंपनीज होती हैं, व्हाट दे यूजुअली डू इज़ कि पहले जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास मेल्स भेजते रहते हैं, लाइक 23rd का भेज दिया, 24th का भेज दिया. सिमिलरली उसके बाद क्या होता है कि जो रिजेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं या दोज हु डिड नॉट मेक इट, जिनका क्लियर नहीं हुआ है, वो लास्टली उन सब के पास भी रिजेक्शन मेल भेजते हैं. एज सच कोई इशू नहीं है कि नहीं आएगा, हमें पता नहीं चलेगा. सो वेट पेशेंटली. और जिनका अभी सिलेक्शन हो गया है, दे हैव टू वर्क हार्ड, अपना प्रिपरेशन कीजिए. यू हैव दी गोल्डन चांस स्टूडेंट, सो आई वुड ओनली सजेस्ट दिस. So this is all about in this video. We have discussed each and everything. If you still have any doubt, you can ask in the comment section of this video only. And we would request you that subscribe the channel also, so that you will get the updates as soon as possible. Like just right now we got the update, and definitely we made the video and we are uploading it after 1 hour or 1.5 hour. Okay students, so I guess this is all about. सो कनेक्ट रहिए चैनल से. जो भी अब नेक्स्ट अपडेट होगी आपकी, या कोई ऑफ कैंपस हायरिंग होगी या कोई आपकी मास हायरिंग होगी फिर से, सो वी विल बी इन कॉन्टैक्ट. आपको हम ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे. एंड वन मोर थिंग, वी हैव अ मेनी
off campus drives. For example, I'll talk about a Namas Industries video, so you guys can search that also, that we are in continuous collaboration with the company. सो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप उसे भी ज्वाइन करते हो, बिकॉज हम उनसे कोलेब्रेशन में एंड वी हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द HR टीम ऑल्सो. आपको कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली वी आर देयर टू सॉल्व इट, बिकॉज अभी हमें काफ़ी डाउट्स आए थे स्टूडेंट से एंड वी directly talk to the HR team and we get the issue rectified. because देखिए that is of a business growth manager, that is the good job. 3 to 5 LPA आपका पैकेज है उसमें. so I guess that is also the good opportunity those students who did not wanted to be in a technical job getting. क्योंकि क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स टेक्निकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट अंदर से क्या उनकी फील है दैट दे आर नॉट गोइंग टू डू इट गुड इन टेक्निकल. सो यू कैन गो इन द मैनेजरियल जॉब ऑल्सो और HR jobs also. there are a lot of opportunities. So students, this is all about today's video, and if you feel any doubt, any suggestion, so you are most welcome in the comment section also. So all the best students, and God bless you all.